गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन 2.0। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट जो है वो नेक्स्ट वर्जन लेके आने वाली है लाइवलीहुड मिशन का अर्बन पुअर और वल्नरेबल सेक्शंस के लिए, जिसका नाम होगा नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन 2.0। तो ये फोकस करेगा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, गिग वर्कर्स, वेस्ट मैनेजमेंट वर्कर्स, केयर वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स और ट्रांसपोर्टेशन वर्कर्स के ऊपर। तो एक्चुअली जो ये नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, जिसको दीनदयाल अंत्योदय योजना भी कहा जाता है, ये 2013 में लॉन्च किया गया था। इसको जो दीनदयाल अंत्योदय योजना 2016 में इसका नाम पड़ा। इसमें जो है अर्बन पुअर को ऑर्गेनाइज करने का जो है ये एक मैकेनिज़्म है, और अपॉर्चुनिटीज़ उनको स्किल डेवलपमेंट की देना, उनके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ क्रिएट करना, एवेंचर्स क्रिएट करना, उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करना, एसेंशियल सर्विसेज देना अर्बन होमलेस को, फिर अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स की लाइवलीहुड कंसर्न्स को एड्रेस करना, ये सब इसके फीचर्स हैं। तो अगर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन और परफॉर्मेंस देखें तो प्राइमरी टारगेट तो इसका अर्बन पुअर ही है, ठीक है। और ये जब कंट्री के सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टाउन्स में ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो ऑलमोस्ट 790 सिटीज़ इस स्कीम के अंडर आती हैं। फंडिंग जो है वो 75-25 की रेशियो में होती है सेंटर और स्टेट्स के बीच में, 90-10 आपका जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के बीच में, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 89.33 लाख वेमेन को ऑलमोस्ट जो है 8.74 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज किया जा चुका है। 15 लाख बेनिफिशरीज़ को स्किल ट्रेनिंग दी जा चुकी है, और 53.76 लाख वेंडर्स जो है उनको आइडेंटिफाई करके लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन दी जा चुकी है, ठीक है। अब अगर हम देखें जो सेकंड वर्जन होगा, इसमें गवर्नमेंट जो है अर्बन पुअर को जो है वो माइक्रो क्रेडिट देगी 4 लाख तक का और 20 लाख तक का, ठीक है, अर्बन पुअर और ग्रुप ऑफ पर्सनस को। तो ये सब्सिडाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होगा 5% के। और इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट कैरी आउट करेगी एक पायलट प्रोजेक्ट जो कि 25 सिटीज़ में होगा। उसके बाद ही इसको पैन इंडिया लेवल पर लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पम्प्ड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। टॉपिक आपके एनवायरनमेंट और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने कहा है कि वो फाइनेंशियल या फाइनल क्लियरेंसेस नहीं देंगे पम्प्ड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को जब तक वेस्टर्न घाट रीजन में जो ये प्लान्ड प्रोजेक्ट्स हैं इनकी साइट विजिट्स नहीं हो जाती। तो पम्प्ड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्या होता है? लार्ज स्केल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होते हैं जिसमें कि वाटर को जो है वो यूज़ किया जाता है जनरेट और स्टोर करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी। तो होता क्या है, दो इसमें वाटर रेजर्वायर्स होते हैं डिफरेंट एलिवेशन पर, जिसमें क्या होता है कि ऊपर से पानी जो है ऊपर वाले रेजर्वायर से जो है पानी जाता है, जब नीचे गिरता है तो टरबाइन को मूव करके जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, और वही पानी जो है वो नीचे वाले रेजर्वायर में स्टोर हो जाता है, ठीक है। और जब बिजली की कम रिक्वायरमेंट होती है तो बिजली का इस्तेमाल करते हुए उस पानी को ऊपर जो है वापस भेजा जाता है ऊपर वाले स्टोरेज सिस्टम में या ऊपर वाले रेजर्वायर में, ताकि जब ज़्यादा ज़रूरत हो बिजली की तो ऊपर से फिर पानी को नीचे गिरा के बिजली को प्रोड्यूस किया जा सके। तो काइंड ऑफ एक तरह से जायंट बैटरी की तरह काम करता है ये पम्प्ड हाइड्रो पावर सिस्टम। तो दो तरह के होते हैं, एक होता है ओपन लूप जिसमें कि नेचुरली फ्लोइंग वाटर का इस्तेमाल किया जा रहा है दो रिजर्वायर्स के बीच में। एक होता है क्लोज्ड लूप, मतलब जिसमें कि फ्लोइंग वाटर को जो है वो टनल के थ्रू जो है वापस ऊपर वाले रिजर्वायर में डाला जा रहा है। अब इसमें चैलेंजेस क्या होते हैं? एक तो इसकी स्टार्टअप कॉस्ट बहुत महंगी होती है, इसकी डिज़ाइन और प्लानिंग बहुत ही मेटिकुलस करनी पड़ती है, और इन्वायरमेंटल और रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं। तो जो ये प्रोजेक्ट्स हैं, ये पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं, ये हाइड्रो पोटेंशियल जो इंडिया का है जो कि लगभग 103 गीगावाट्स का है उसको जो है टैप करना चाहते हैं। और लगभग अगर हम देखें 11.98 गीगावाट्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इंडिया अभी तक बना चुका है, पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, उसको गो अहेड मिल चुका है एक्चुअली। और कंसर्न्स ये हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट कह रही है कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं ये बायोडाइवर्सिटी और फॉरेस्ट को एडवर्सली अफेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए जब तक हम वेस्टर्न घाट्स की जो ये प्रोजेक्ट 15 प्रोजेक्ट्स जो प्रीलिमिनरी परमिशंस जिनको मिल चुकी है उनको हम तब तक फुल क्लियरेंस नहीं देंगे जब तक वहाँ पर साइट की विजिट नहीं की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल एग्रीकल्चर कोड। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने प्रोसेस शुरू कर दिया है नेशनल एग्रीकल्चर कोड बनाने का कंट्री में, जैसे कि आपका नेशनल बिल्डिंग कोड है या नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड है। तो ये पूरी एग्रीकल्चर साइकिल को कवर करेगा, और पहले इसमें जो है एक जनरल प्रिंसिपल्स होंगे सभी क्रॉप्स के लिए, सेकंड जो कोड होगा वो ये क्रॉप स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स को भी जो है वो डील करेगा।
एक तरह से फार्मर्स को गाइड करेगा ये, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के लिए, ऑफिशियल्स के लिए जो एग्रीकल्चर फील्ड में जो है वो काम कर रहे हैं, उनके लिए गाइड का काम करेगा। सभी तरह के एग्रीकल्चर प्रोसेसेस और पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशंस को ये कवर करेगा। इसमें सभी तरह के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं इनपुट मैनेजमेंट के लेकर और क्रॉप स्टोरेज से लेकर से रिलेटेड, वो सब इसमें जो है वो कवर किए जाएंगे। और जो इमर्जिंग एरियाज़ हैं जैसे नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग, उनको भी डील किया जाएगा। तो एक तरह से ये क्वालिटी हमें इंडियन कल्चर में, एग्रीकल्चर में ये जो है वो इंश्योर करेगा और फार्मिंग कम्युनिटी को कॉम्प्रिहेंसिव गाइड की तरह काम करेगा। ठीक है, तो इंडियन स्टैंडर्ड्स को एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के साथ जो है वो इंटीग्रेट करने का ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एनवी स्टैट्स 2024। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने 7th कंसेक्यूटिव इशू निकाल दिया है एनवी स्टैट्स इंडिया 2024 का, जो कि सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग के साथ अकॉर्डेंस में चलता है। ठीक है, जिसको कंपाइल किया गया है। तो ये 7th है इन द सीरीज़, जिसमें कि एनर्जी अकाउंट्स, ओशन अकाउंट्स, सॉइल न्यूट्रिएंट इंडेक्स और बायोडाइवर्सिटी को कवर किया गया है। तो अगर हम इसके हाइलाइट्स देखें, 72% इंक्रीज़ देखने को मिला है नंबर में और लगभग 16% इंक्रीज़ देखने को मिला है टोटल प्रोटेक्टेड एरिया में कंट्री के बीच में 2000 साल 2000 से 2023 के बीच में। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका सब इकोसिस्टम है मैंग्रोव्स, उसमें 8% का इंक्रीज़ देखने को मिला है 2013 से 2021 के बीच में। ठीक है, फिर कुछ स्पीशीज स्पेसिफिक भी इसमें जो है वो हाईलाइट्स दिए गए हैं। अब सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग है जिसके ऊपर ये एनवी स्टैट्स हमने बेस किया है। ये एक एग्रीड इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड है जो डिस्क्राइब करता है इंटरेक्शन बिटवीन इकोनॉमी और एनवायरनमेंट को। इसका एम है कि इंटीग्रेट किया जाए पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम अदर डिसिप्लिन्स। ठीक है, और ये फोकस करता है इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के ऊपर इन्वायरमेंट के, और एक कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेमवर्क देता है जिसमें कि इंटीग्रेटेड और कॉम्प्रिहेंसिव स्टैटिस्टिकल फ्रेमवर्क जो है हैबिटेट्स और लैंडस्केप्स के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फ्लोरोसेंट नेचुरल डायमंड। टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक रीसेंट स्टडी की गई है पब्लिश यूएस की एक यूनिवर्सिटी द्वारा, जिसमें कि फ्लोरोसेंट नैनो डायमंड्स का इस्तेमाल किया गया है हाई वैक्यूम में और उनको स्पिन किया गया है बहुत तेज़ी से, जिससे कि उसके बहुत सारे इंडस्ट्री में एप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो फ्लोरोसेंट नैनो डायमंड्स क्या होते हैं? तो नैनोमीटर साइज डायमंड्स होते हैं जो कि कार्बन नैनो पार्टिकल से बने हैं, और ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में इनको प्रोड्यूस किया जाता है। स्टेबल होते हैं अंडर लाइट, ये टॉक्सिक नहीं होते हैं लिविंग थिंग्स के लिए, ब्लिंक भी नहीं करते हैं जब ये इरेडिएट रहते हैं लंबे टाइम तक। और फ्लोरेसेंस जो है इसके लाइफ स्पैन जो है वो ग्रेटर देन 10 नैनो सेकेंड्स होता है, जो कि बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्वांटम डॉट्स। तो इनको जो है हम इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, थर्मल या ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं इनकी। तो जैसे कि हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग करना, जो है टेम्परेचर सेंसिंग हो, कोरिलेटिव माइक्रोस्कोपी हो, या फिर इवन जो है बायोलॉजी में साइंटिस्ट इसका इस्तेमाल करके सेल्स और प्रोजेनी को ट्रैक कर सकते हैं ओवर लॉन्गर पीरियड्स। इसको सेंसर्स की तरह भी यूज़ किया जा सकता है हाई वैल्यू इंडस्ट्रीज़ में और स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्लोबल स्ट्रेटजिक प्रिपरेडनेस, रेडीनेस एंड रिस्पांस प्लान्स। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ग्लोबल स्ट्रेटजिक प्रिपरेडनेस, रेडीनेस एंड रिस्पांस प्लान जो है, जो कि डेंगू और बाकी की एडिस अजिप्सी जो वायरस से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, उनसे डील करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने निकाला है। तो ये बर्डन ऑफ डिसीज़ को कम करना चाहता है, खासकर जो डेंगू या फिर एडिस बॉर्न एर्बो वायरल डिसीज़ से होता है, जैसे कि जीका या चिकनगुनिया। ओके, तो ये स्ट्रेटजिक प्लान जो है वो 1 साल के लिए इम्प्लीमेंट किया जाएगा सितंबर 2025 तक। ये अलाइंड है ग्लोबल वेक्टर कंट्रोल रिस्पांस जो प्रोग्राम है WHO का 2017 से 2030 के बीच में, उसी के ही अंदर का एक इनिशिएटिव है ये। तो इसमें अगर आप इसके कंपोनेंट्स देखोगे तो इमरजेंसी कोऑर्डिनेशन करना, कोलैबोरेटिव सर्वेलेंस, कम्युनिटी प्रोटेक्शन, सेफ एंड स्केलेबल केयर, एक्सेस टू काउंटर मेजर्स, ये सब इसके जो है कंपोनेंट्स हैं। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लिपुलेख पास। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस और आप आई एम सॉरी ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो पिलग्रिम्स ने पहला व्यू देखा है सेक्रेड कैलाश पीक का ओल्ड लिपुलेख पास से, इंडियन टेरिटरी से ही। तो ये एक हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन पास है जो कि कुमाऊं रीजन ऑफ उत्तराखंड में, मतलब पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में लोकेटेड है, एट ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, नेपाल एंड चाइना। और
फर्स्ट इंडियन बॉर्डर पोस्ट है जो कि ओपन की गई थी चाइना के साथ ट्रेड करने के लिए 1992 में। तो ये एक एंशंट राउट है जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट को तिब्बतन प्लेट्यू के साथ कनेक्ट करता है। और ये इसके रिलीजियस सिग्निफिकेंस इसलिए है क्योंकि ये कैलाश मानसरोवर यात्रा का भी एक पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, को डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो असम गवर्नमेंट ने एक न्यू कंसेप्ट निकाला है को डिस्ट्रिक्ट नाम से, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें जो है आपके सिविल सब डिविजन्स को ख़त्म कर दिया जाएगा और वहाँ पर को डिस्ट्रिक्ट का कंसेप्ट लाया जाएगा। बेसिकली ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही जो स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, को डिस्ट्रिक्ट। और ये लीड किए जाएंगे ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका कि एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस जो होते हैं नीचे लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट से भी नीचे लेवल पर, उनको एड्रेस किया जाए। जो को डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स हैं उनके पास सेम पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स के पास होती हैं। तो ये लैंड रेवेन्यू मैटर्स, डेवलपमेंट, वेलफेयर वर्क, एक्साइज, डिज़ास्टर मैनेजमेंट वर्क, ये सब कर सकेंगे। ठीक है, और रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क भी जो है वो कर सकेंगे, जैसे राशन कार्ड इशू करना, कास्ट सर्टिफिकेट्स देना, सेल परमिशन ऑफ लैंड देना। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बिजनेस रेडी इंडेक्स। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो स्टेट बिजनेस रेडीनेस रैंकिंग्स को अपकमिंग वर्ल्ड बिजनेस की बी रेडी इंडेक्स के साथ जो है अलाइन करना चाहती है। तो बिजनेस रेडी इंडेक्स क्या है, सक्सेसर है ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स का, जो 2021 में वर्ल्ड बैंक ने बंद कर दी थी कुछ कंट्रोवर्सीज की वजह से। तो ये ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव है जिसमें कि क्वांटिटेटिवली असेस किया जाता है बिजनेस इन्वायरमेंट अक्रॉस वर्ल्ड इकोनॉमीज़, और अंडरस्टैंड किया जाता है कि रेगुलेटरी और पॉलिसी इन्वायरमेंट एक कंट्री का कैसा है विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस रेडीनेस। ठीक है, 10 पैरामीटर्स को ट्रैक किया जाता है। और जो है अभी 54 इकोनॉमीज़ जो है वो इसको कवर कर रहा है। धीरे धीरे 180 कंट्रीज़ को ये कवर करेगा 2026 तक। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आकाश तीर सिस्टम। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हाइटेंड ग्लोबल सिक्योरिटी कंसर्न्स के टाइम पर इंडियन आर्मी ने अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को एनहेंस करने के लिए 100 आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम्स जो है वो एक्वायर किए हैं। तो ये एयर डिफेंस कंट्रोल और रिपोर्टिंग सिस्टम्स हैं जो कि सर्व करेंगे एज क्रिटिकल असेट, सेफ गार्ड करने के लिए कंट्री को फ्रॉम एरियल थ्रेट्स, चाहे वो मिसाइल हो या रॉकेट अटैक्स हो। सोफिस्टिकेटेड इंटीग्रेटेड कंट्रोल और रिपोर्टिंग सिस्टम है इसमें, ताकि न्यूट्रलाइज किया जा सके एनिमी थ्रेट्स को स्विफ्टली। रियल टाइम बैटलफील्ड व्यू देंगे ये मिलिट्री पर्सोनल को, ताकि डिटेक्ट, ट्रैक, एंगेज किया जा सके एरियल थ्रेट्स को, जैसे कि इनकमिंग मिसाइल या एनिमी एयरक्राफ्ट को। तो इसमें सर्वेलेंस असेट्स, रडार सिस्टम्स, कम्युनिकेशन नोड्स जो है वो का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि प्रिसाइज कोऑर्डिनेशन किए जा सके एयर डिफेंस ऑपरेशंस की। तो इसको डेवलप किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। और इंडियन आर्मी जो है वो इससे एयर स्पेस को मॉनिटर कर पाएगी और डिलीवर कर पाएगी टाइमली रिस्पॉन्सेज टू एनी इमिनेंट थ्रेट्स। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वी श्योर आर्ट्स। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने 4th जनरेशन वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को अभी रिसेंटली टेस्ट किया है। तो ये एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, डेवलप किया गया है न्यूट्रलाइज करने के लिए लो ऑल्टीट्यूड एरियल थ्रेट्स को शॉर्ट रेंजेस पर। इसको डेवलप किया गया है डीआरडीओ के रिसर्च सेंटर इमारत द्वारा। ठीक है, तो इसके डिज़ाइन जो है वो, उसमें लॉन्चर है जिसमें जो कि हाईली ऑप्टिमाइज़ किया गया है ईजी पोर्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए, और बहुत ज़्यादा पर्सोनल की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसको ऑपरेट करने के लिए। तो डुअल थ्रस्ट सॉलिड मोटर द्वारा ये प्रोपेल्ड है। इसकी रेंज लगभग 6 किलोमीटर्स तक होती है। लाइट वेट है, इसलिए इसको बहुत जल्दी डिप्लॉय किया जा सकता है माउंटेन्स में भी, चाहे वो एलएसी हो, चाहे वो लद्दाख के साथ हमारा जो बॉर्डर है चाइना के साथ, या फिर अरुणाचल प्रदेश में भी। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is National Urban Livelihood Mission 2.0. This topic is important for your governance section. So government will soon roll out the next version of livelihood mission for urban poor and vulnerable sections, and this will be called the National Urban Livelihood Mission 2.0. And this will focus on 6 groups, including the construction workers, gig workers, waste management workers, care workers, domestic workers, and transportation workers. So this NULM was launched in 2013 by Housing and Urban Poverty Alleviation Ministry, which was called at that time. And in 2016,
It was replaced with the name Deen Dayal Antyodaya Yojana, and the focus was on organizing urban poor, and it also aims to create opportunities for skill development so as to give them market based employment, also help them to set up self employment ventures by ensuring easy credit to them. Okay. The mission aims to provide shelter equipped with essential services to urban homeless people in a phased manner and address livelihood concerns of the urban street vendors by facilitating access to suitable spaces, credit, and social security schemes. Okay. So, how has been its implementation and performance? So, the primary target of NULM is basically the urban poor and the urban homeless. So this was implemented in all district headquarter towns of India. So 790 cities are being presently served under the NULM, and the funding is shared between the center and states in the ratio of 75 and 25. And of course, the special category states have 90-10 funding. So as per the mission, about 89.33 lakh women have been brought under the total of 8.74 lakh self-help groups in the cities. 15 lakh beneficiaries have undergone skill training and 8.2 lakh have been placed in employment. A total of 53.76 lakh vendors have been identified and given letters of recommendation. So, what will be this second version? The government will facilitate eligible individual urban poor or a group of such persons to avail microcredit of up to 4 lakh and 20 lakh respectively. This microcredit will be provided at a subsidized rate of 5% so that they can help the beneficiaries to start their enterprises, create social infrastructure like a labor chalk, and also provide innovation grants for purposes like buying sanitation machineries. So the center will be carrying out a kind of pilot exercise initially for 25 cities, and later on the scheme will be extended to the other cities as well. Okay. So the next topic is pumped hydropower projects. This topic is important for your environment section and also your economy section. Union Environment Ministry's expert panel has decided that it will not be granting final clearances to the pumped hydropower projects proposed in the Western Ghat region without site visits. So what is the pumped hydropower project? It is the large scale energy storage systems which use water to generate and store electricity. So it basically works as a configuration of two water reservoirs at different elevations which can generate power as water moves down from one to the other, passing through a turbine. This system also requires power because it pumps back water back into the upper reservoir, and it acts similarly to a giant battery because it can store power and then release it when required. Okay, so there are two types of these PSHs. In the open loop system, a reservoir is connected to a naturally flowing water feature through a tunnel using a turbine pump and generator or motor to move water and create electricity. In the closed loop system, two reservoirs are connected via a tunnel without flowing water by using a turbine or pump or a generator motor to move water and create electricity. So, what are the benefits of it? Of course, it can balance the grid during periods of high demand or low supply, and it can also help integrate renewable energy sources into the grid. But there are challenges as well, like they have high startup cost, meticulous design and planning is required. There are certain environmental and regulatory constraints as well. So central government has been pushing for the expansion of pumped storage projects capacities so as to plug the variability of solar and wind energy in the electricity grid. Central Electricity Authority of India has identified that on river pumped storage hydro potential in India is about 103 gigawatts, and Ministry of Environment has given go ahead to these pump storage hydro projects with a capacity of 11.98 gigawatts recently. So Ministry of Environment has said that 15 such projects which have been given preliminary permissions in the Western Ghats will only be given the final clearance once site visits would be carried out so as to ensure thorough scrutiny. So the next topic is National Agriculture Code. This topic is important for your environment and your economy section. So Bureau of Indian Standards has begun the process of formulating a National Agriculture Code on the lines of the existing National Building Code and National Electrical Code. So this will cover the entire agriculture cycle
and it will also contain a guidance note for future standardization. This code will have two parts. The first part will contain general principles for all crops, and the second will deal with crop specific standards for the likes of paddy, wheat, oilseeds, and pulses. The National Agriculture Code will serve as a guide for farmers, agriculture universities, and officials which are involved in this field. It will cover all agriculture processes and post harvest operations. Okay, it will also include standards for input management. The NSC will cover all new and emerging areas like natural farming and organic farming, as well as the use of Internet of Things in the field of agriculture. So it will act as an enabler of quality culture in Indian agriculture, and it will create a comprehensive guide for the farming community. It will also integrate relevant Indian standards with recommended agricultural practices. It will also aid in the capacity building program organized by Agriculture Extension Services and the civil society organizations. So the next topic is NV Stats 2024. This topic is important for your economy and your environment section. So Ministry of Statistics and Program Implementation has compiled and released the seventh consecutive issue of the publication called the NV Stats India 2024 Environment Accounts, and this has been compiled in accordance with the system of environmental economic accounting. This current publication, which is seventh in the series, will cover the energy accounts, ocean accounts, soil nutrient index, and biodiversity. And what are the highlights of it? So there has been around 72% increase in the number and around 16% increase in the area for the total protected area during 2000 to 2023 period. This the coverage of mangroves, which is an important sub ecosystem of the ocean ecosystem, has increased around 8% over the years 2013 to 2021. So what is system of environmental economic accounting? So this is an agreed international statistical standard for describing the interaction between the economy and the environment. So it aims to integrate perspectives from other disciplines, and it also focuses on individual components like the environment that provide material and space for all economic activities. The ecosystem accounting is a complementary framework which constitutes an integrated and comprehensive statistical framework for organizing data about habitats and landscapes. So the next topic is fluorescent nano diamond. So there is a typo here. It's not natural, it's nano diamond. So in a recent study which was published in the Nature Communications, physicists from Purdue University in the US have reported levitating fluorescent nano diamonds. Levitating means the flow of a material like in a magical thing. So it's these fluorescent nano diamonds were levitating in a high vacuum, and they were spin very fast, which will pave the way for multiple applications in industry. So these fluorescent nano diamonds, they are nanometer sized diamonds which are made up of carbon nanoparticles. They are produced in high temperature and high pressure. They are stable under light and they are not toxic to living things. So their fluorescence lifespan is greater than 10 nanoseconds, which makes them better than quantum dots. So they can be doped to enhance their electrical, magnetic, thermal, and or optical properties. So they have many applications in high resolution imaging like microscale temperature sensing, correlative microscopy, and others. So in biology, scientists can also use these fluorescent nanodiamonds to track cells and their progeny over long periods. So they can also be used as sensors in many high value industries and strategic sectors. So the next topic is global strategic preparedness, readiness and response plan. This topic is important for your social issues. So global strategic preparedness, readiness and response plan has been prepared to tackle dengue and other Aedes borne arboviruses, and it has been launched by the World Health Organization. The aim is to reduce the burden of disease, suffering and deaths from dengue and other Aedes borne arboviral diseases like Zika and chikungunya by fostering a global coordinated response. Okay, so there are five key components, namely emergency coordination, collaborative surveillance, community protection, safe and scalable care, and access to countermeasures. So this strategic plan will be implemented over 1 year until September 2025, and it is aligned with the global vector control response 2017-2030 period. Okay, which is a global strategy to strengthen vector control worldwide.
So the next topic is Lippo Lake Pass. This topic is important for your environment section. So pilgrims had the first ever view of the sacred Kailash peak from the old Lippo Lake Pass inside the Indian territory. So Lippo Lake Pass is a high altitude mountain pass located in the Kumaon region of Uttarakhand near the tri-junction of India, Nepal and China. And it links the Indian state of Uttarakhand with the Tibet region of China. It is situated in the Vyas Valley of Pithoragarh district of Uttarakhand. It is the first Indian border post which was opened for trade with China in 1992. It has been utilized for centuries as a trade route between Indian subcontinent and Tibetan plateau. This pass also has religious significance because it is an integral part of the Kailash Mansarovar Yatra. Okay. So the next topic is co-district initiative. This topic is important for your governance section. So recently Assam government has launched a new concept called co-district within a district administration by doing away with the civil subdivisions. So co-districts are those smaller administrative units below the districts led by an officer of the rank of assistant district commissioner. So this is a first of its kind initiative in the country which will take governance one step closer to people. So this is going to address the administrative challenges which are faced by the administration in the districts. So the co-district commissioners will have the powers and responsibilities similar to those of the district commissioners, and these offices will be tasked with the carrying out the land revenue matters, development and welfare work, excise and disaster management work. So they will also conduct routine administrative tasks like the issue of ration cards, caste certificates, and sale permission of land. Okay. So the next topic is business ready index. This topic is important for your economy section. So Indian government is aligning state business readiness rankings with the upcoming World Bank's Be Ready index. So Be Ready index is a successor to the ease of doing business rankings, which were discontinued in 2021 by the World Bank due to certain controversies. So this is an initiative which focuses on quantitatively assessing the business environment across world economies, and global financial institutions and multinational companies will use this index as a benchmark to understand the regulatory and policy environment of a country. So this tracks basically 10 parameters covering a firm's life cycle from starting, operating, closing, and reorganizing a business. So this index will expand in three stages. Currently, it covers about 54 economies, and it will reach up to 180 economies or 180 countries by 2026. So the next topic is Akash Tir system. This topic is important for your security section. So due to heightened global security concerns, Indian Army has significantly enhanced its air defense capabilities with the acquisition of 100 Akash Tir air defense systems. So these are advanced air defense control and reporting systems which will serve as the critical asset in safeguarding the country from aerial threats, including missile and rocket attacks. So it is a sophisticated integrated control and reporting system designed to neutralize enemy threats swiftly. So it provides a real-time battlefield view also, allowing the military personnel to detect, track, and engage aerial threats like incoming missiles or enemy aircraft. So it also brings together surveillance assets, radar systems, and communication nodes, enabling precise coordination of the air defense systems. And it has been developed by the Bharat Electronics Limited. Okay, so this will enhance Indian Army's ability to monitor airspace and deliver timely responses to any imminent threats. So the next topic is V-SURE. This topic is important again for your security section. So India has successfully conducted test of fourth generation very short range air defense system. So this V-SURE is basically a man-portable air defense system which has been developed for neutralizing low altitude aerial threats at short ranges. They have been developed and designed by DRDO's research center called Imarat of Hyderabad and other laboratories as well. So the design of this missile includes the launcher, which has been highly optimized to ensure easy portability, and it does not require a lot of personnel to operate. So this is propelled by a dual thrust solid motor. It has a range of up to 6 kilometers. It is very lightweight and it can be deployed very quickly in the mountains close to the LOC with China in Ladakh and Arunachal Pradesh as well. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.